Hey guys, Kirti here. How's it going? So today we're talking about Bigg Boss Couples. A lot of our favorite celebrities have come into the house. We have rooted for them, and then they have become a power couple. So we want to talk about whether we like them, dislike them, whether they were romantic and cute, or they were cringy and weird. चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड रियलिटी शो हो, चाहे इंडियन टीवी रियलिटी शो, प्यार चाहिए. When I was younger, I loved the fairy tales क्योंकि उसमें प्यार ही प्यार था. तो मैं बड़ी हुई हूँ, I still love the fairy tales, even though reality does seep in. And Bigg Boss में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं देखती हूँ ना कि two people are coming together, मुझे होता है, oh my god, this is true love. ये कितना खूबसूरत है. And then people around me are like, this is drama. Nothing is happening. This is drama. Especially celebrities, we forget they're actors. And they're very good actors, to be very honest. So we are like, hi, कितने प्यार है, कितना प्यार चल रहा है. And then there are those जिनका लग रहा होता है नहीं ये fake कर रहे हैं, लेकिन ultimately they end up being together. One couple that I want to talk about right off the bat, उनके साथ यही हुआ. मतलब उन्होंने नहीं किया, पर हमारा perception ये था. We're talking about Tejran here. Karan Kundra and Tejaswi Prakash. They are the hit, happening Jodi. Everyone loves them together. I am a huge Karan fan. I was Karan squad all the way. और मैंने गालियाँ भी बहुत खाई हैं, लेकिन I was Karan squad. Full disclosure, मुझे Tejaswi as a contestant पसंद नहीं थी. मुझे इनकी जोड़ी भी समझ नहीं आई थी. There were a lot of people saying कि this is a PR stunt. This Tejran is like a planted seed. And मुझे था कि Karan doesn't need a Teja. He can win this show by himself, and because of the game maybe मुझे ये जोड़ी समझ में नहीं आई. मुझे लगा कि सारा focus Karan का तेजा पे चला गया, his relationship पे चला गया, and अपनी game भूल गया. On the flip side, मुझे लगा Teja kept the relationship in balance and her game in balance. She never forgot कि ये game है और game जीतनी है. मुझे लगा कि okay, या तो ये game है, like they just used him to win, या ये पक्का है. And for now, this outside world, they look so cute together. इनकी YouTube stories मैंने देखी, Instagram पे stories आती हैं इनकी. They are so cute. वो बड़ा critical time था. क्यों? क्योंकि Karan was all over the place. क्योंकि he was in the forefront. He was a top runner. और वहां पे तेजा was a tough competition. क्यों? क्योंकि तेजा was always on his side. तो उसको पता था कि अगर ये मेरी साइड पे भी है तो मुझे इससे भी कल को निपटना पड़ सकता है. लेकिन लव हैपेंड, प्यार हो गया. तेजा इज ब्यूटीफुल, करण इज सेक्सी, और फिर हाउ कैन यू स्टॉप. और फिर बाद में उनकी पुरानी वीडियोस आती हैं जहां पे उन्होंने एक शो भी पहले इकट्ठे किया हुआ है. देयर वाज दिस स्पार्क, बट यू नो फ्लर्ट चलता है, लेकिन कभी सीरियसनेस नहीं आई. बट द बेस्ट पार्ट इज लाइक यू सेड, after Bigg Boss, everybody was like when she won, it's over, they are not together, they are gonna end it. But they proved everybody wrong. Look at Karan. He flaunts his love. I was proved wrong, Odi. मुझे लगा कि अच्छा जो भी है बंदे की ego तो होती है. When I say banda, I mean men and women. Everyone has an ego. This was the Karan Kundra, the roadies judge, you know, a popular actor. People loved him, है ना? So for him, I'm sure he thought कि I'm gonna win the show, and I think he could have, but I think love took the front, you know, and the game came behind. And I think ये हुआ, मुझे लगा कि अब ये हारा है ना, तो ये हफ्ते 2 हफ्ते महीना चलेगा, and फिर you know bye bye. But I'm just so surprised. Jahan jate, he's really happy for her. They just bought her car. He was like the biggest cheerleader. You know, he loved the whole thing, and so it was cute. नहीं, I have seen the biryani videos. वो उसके लिए बिरयानी बनाती है, वो रात को उसके घर आता है, and then there was this, you know, वो मुंडेर पे उसका इंतजार कर रही है. I thought कि ये सिर्फ दिखावा हो रहा है, लेकिन it was so consistent and so persistent कि नजर आता है कि हाँ जी अभी तो इनको पावर कपल का या you know the best couple का अवार्ड मिला है. But the fact is, Tejaswi, whatever she is, she just went ahead like a fire. और अभी उन दोनों का इकट्ठे होना, it's beautiful. वो अपने shows पे इसको लेके आते हैं, चाहे वो लॉकअप हो, चाहे वो डांस दीवाने हो, नागिन के सेट्स पे जाता है.
It's lovely. And लोग कहते हैं कि ये कितना cringe है, हम इसके पास कोई काम तो नहीं है, like he's always picking her up, dropping her off, but is that all he's doing? He's a valet? And I'm like, hello, he's a boyfriend and he's picking his girlfriend up and dropping his girlfriend off. What's wrong with that? That's, जब नया नया प्यार होता है, यही तो होता है. That's the cute stuff that happens. And I feel like people ना Bigg Boss characters जो होते हैं, जो ये play करते हैं, they forget कि वो एक game show है and this is real life. Real life, आप ही अपने boyfriend या girlfriend को pick up करोगे, drop off करोगे, wait करोगे, खाना बनाओगे. This is all cute stuff. एक चीज और है ना, क्योंकि जब वो बिग बॉस के अंदर थे भी, वहां पे नजर आता, क्योंकि तेजस्वी वाज ऑलवेज, मैं बहुत सिक्योर हूँ इसको लेके, विच वी सॉ शी वाज नेवर, लेकिन हम सारे ये क्रिटिसाइज करते थे कल को इसको काम मिलेगा, वो लड़कियों के साथ काम करेगा, एंड एवरीथिंग वेंट इनटू बबल, वो एयर बबल था वो खत्म हुआ, और दे आर लविंग ईच अदर, सो व्हाट्स रॉन्ग? आई एम इन फॉर देम, आई लव तेजरन नाउ. I do too. I like how she is with Karan. And क्योंकि मुझे Karan पसंद है, and I love, so I'm loving them together. And actually, मुझे obviously ये पता नहीं है, obviously, but I feel like ये जो नया घर उसने लिया है, this posh property that he is gonna move into one day, I feel like that's their future. That's maybe their future. He's getting this house. Definitely. He has the girl. Then the girl will come. I feel like I don't know. I think maybe their stars. But this is what people do when they are in love now. And you're so right. You are into Karan, I'm into Teja, so we can balance it out. So that is why it's a win-win for both of us. So it's great. They are the best couple right now. From Bigg Boss OTT to Bigg Boss, I was a big Shamita supporter. I love her. I think she's a boss lady. She's strong. She's confident. Jo usko chahiye, usko pata hota hai. And one of the things she wanted was Raquesh. Now, I from day one was a ShaRa supporter. I love ShaRa. मुझे OTT में बहुत पसंद है because I feel like they balanced each other. He has his things where he's obsessive about. She has her things where she's very particular about. लेकिन वो अलग-अलग चीजें हैं. And I know कि वहाँ fights भी बहुत हुई थी. She was very possessive. But that's because, when you first get attracted to someone, there's going to be that possessiveness. Give me attention. Why are you looking there? You need to be on my side always. And I feel like as she got into Bigg Boss, the relationship became more secure. Because OTT के बाद, they got a couple of weeks or something together in the real world. And so I feel like I loved ShaRa. मुझे वो बहुत cute लगते थे. Mature couple, not like in their teens. It was a mature couple with real problems. क्योंकि दोनों ने जिंदगी देखी हुई है. They are not together anymore, which I'm very sad about because I love ShaRa, I love Raquesh, I love Shamita. This is one Jodi I really love, and they were very good-looking Jodi. ShaRa क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पे I love Raquesh, you love Raquesh. यहाँ पे I love Shamita, you love Shamita. Both are great individuals. तो दोनों के लिए बुरा लगता है as a together couple and as individuals both. जब मैंने इनको पसंद करना शुरू किया था एज ए कपल, देयर वाज वन नाइट जहां पे राकेश ओपनड अप और वो उससे फ्लर्ट करा था बिस्तर के ऊपर, एंड आई लव्ड इट. आई वाज लाइक आई हैव नेवर इमेजिन्ड कि राकेश वुड स्टोल द शो, एंड शमिता शी रिस्पोंडेड प्रॉपर्ली जैसे एक अच्छा होना चाहिए. शमिता का प्रॉब्लम इज लेस अबाउट पोजेसिवनेस, आई थिंक कंट्रोल फ्रीक है, क्योंकि आप अपने हालात से देखते हो, एंड शी हैज बीन थ्रू आउट हर लाइफ कि जी मैंने ये लूज ऑन किया अपने रिलेशन के ऊपर, तो एक कंट्रोल स्ट्रीक आ जाती है. और राकेश एक आर्टिस्ट भी है, तो दोनों के अंदर बैलेंस करने का थोड़ा इशू आता ही है. राकेश ऑन द कॉन्ट्ररी इतना ओपन अप नहीं हुआ था बिग बॉस के ऊपर एज ए पर्सनैलिटी, जबकि शमिता जस्ट शी put her soul out. We know her in and out. हमें पता है वो कैसी है. 6 महीने कैमरास के सामने, I think we know her. Constant 6 महीने. And that to that Sami, More Sami. Oh God, they were fire. Oh my God. And okay, you said कि राकेश इतना खुल के नहीं आया था. I think that's the best thing about him. क्योंकि जो ये Bigg Boss या reality TV personality लोग ढूंढते हैं ना, strong, aggressive, loud, like us maybe. I feel like he was calm, cool, collected. He was sweet. He was genuine. He was smart. हर topic में घुसना नहीं है. हर topic में बोलना नहीं है. If someone is freaking out, doesn't mean you be बजो. He was calm. That's why I liked it, because I feel like जब वो freak out होती थी ना, he used to calm her, and then when he freaked out a little bit, she calmed him. But I still feel like that was a new thing. टकरार होनी थी, But I feel like कि बाहर आके they understood each other. I loved कि वो Shilpa Shetty के जो
son or daughter, one of the birthdays came, he was there at the birthday party. He went hanging out with the mom, and then on his birthday he wished her. They're not together. I would love to see them together. I just wish कि अगर कोई problem है वो reconcile करें, क्योंकि निशांत correctly said कि जी he's a tough man and Shamita is a tough lady. Yes. दोनों का compromise करना भी थोड़ा tough लग सकता है, क्योंकि strong headed दोनों हैं. दोनों ने life में बहुत सीखा है, like you said, they are mature people. So I just wish कि reconcile करें because we love them. They are the jodi. I love my ShaRa. And Odie, I know your and my favorite was when he would make those tattoos on her. Oh my God, it was so. It cute. was love. It was thorough love. Table पे जब लिखते थे, that was so cute. Yeah, I loved it. that was I so loved cute. it. And then Raquesh. And this is the best part about Shamita as well, क्योंकि वो खाली राकेश को लेके, राकेश को लेके इतनी possessive नहीं है. वो अपने फ्रेंड्स को लेके भी कंट्रोल फ्रीक है. Yeah, so she is like that. We just wish, because we love them both equally. We can't take sides. Who is right, who is wrong? We just want them together. They're beautiful people. Differences तो होती हैं, and I just feel like, you're not going to be with a clone. So a little bit compromise, थोड़ा सा वो सुन ले, थोड़ा सा वो सुन ले. Adjustment, yeah. Yeah, exactly. Okay, मुझे ये पूछने की भी जरूरत नहीं है if you like these two, because I know you like these two, because I love these two. I love it. You already know who I'm talking about. I'm talking about Rubina, Abhinav and Rubina. I love them together. Obviously they were married, ये साथ में आए, इन दोनों को फायदा हुआ गेम में आके. I thought कि चलो है, you have a support system. आपको पता है चाहे push comes to shove, you guys might not be getting along, लेकिन कोई तीसरा नहीं आ सकता लड़ाई करने या करवाने. Very true. But at the same time, जैसे weekend के wars में होता था या fights में होता था, they were always pitted against each other. कि अभिनव तेरा साथ नहीं दे रहा, अभिनव तुझे करने देता है जो तू करती है. फिर जब अभिनव उसको हेल्प करता था या समझाता था, अभिनव you're her husband but she's a contestant, उसको करने दो जो करना है. And they're like, hello, जब मैं करने देता था तब मरो, अब मैं नहीं करने दे रहा तब मरो, ये हो क्या रहा है? तब मरो. Abhinav is that classic good guy, beauty and brains. Like he's hot, he's smart, I feel like dignified. उसने game भी बहुत अच्छे से खेली थी. बहुत अच्छी. Like no natak, like a straight guy who's doing everything to the T and playing by the rules. I know rules में बहुत ज़्यादा घुसते थे. That's another thing. But I thought it was so good. And वो जो उसका bicycle task था ना, I loved it. And one thing, he's a hero. मुझे भी लगा in the beginning, the first week, I think it was the first week when he got the opportunity to go in the house, and उसने कहा था कि give up something or bring Rubina in, and he said no, Rubina can stay out. And mujhe laga, if I was his wife, I would have been pissed. Like, what the hell? Why are you not bringing me in? But I loved, क्योंकि वो कहते कि हमने इतनी trekking की है, इतनी hiking and camping की है, I know this is nothing for her. And that showed how strong she is and how much he believes in her. मेरा भी बहुत personal bias है अभिनव को लेके, especially before Bigg Boss I was a Abhinav fan. मुझे रबीना का पता था because she's the face of colors. She has been into the dramas as well. वो soaps करती रही हैं. लेकिन अभिनव को मैं बहुत follow कर रहा था. And when they got married, I was like, हाय रबीना से शादी कर ली अभिनव ने. And when they both entered, I was like, I love this girl as well. Rubina was a lady and he was a gentleman. Yes. अभिनव ने दिखाया है कि you can be honest, you can be decent, you don't have to be dirty player. वो कभी dirty game नहीं खेली उसने. That's the best thing about it. दोनों नहीं थे. And like you correctly said कि जी उन दोनों को इतना ज्यादा criticism targeting किया गया, उनको pitted against each किया गया. We felt really bad in all the weekend का wars. Yes. Those were the toughest weekend का wars to sit through. Why are they targeting him and her? Every little thing. ये कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, इसने कितनी पढ़ाई की है, Mr. Scientist या जो भी उसको कहते थे. I was like, तो क्या हो गया? He's a smart guy. Let him live. Exactly like Rubina, I hated that Saman thing. मुझे सामान बोला गया, I hated that. I was like, वो बंदा इतना decent. There was this कविता कौशिक episode जहाँ पे in the weekend का बार he wept. I wept along with him. I never wept for a guy. I cried my heart out. He's such a decent man. I also cried during this Rakhi Samant business that happened to them. Exactly. मुझे इतना बुरा लगा that they said basically to him, you led her on.
You allowed Yeah. this to happen. अरे वो जोक कर रही है, वो हंस रहा है, that doesn't mean he's giving her कि अच्छा तू और कर, बंदे की लिमिट होती है. वो रूबीना भी respectfully उसको करने दे रही है, like no wife wants to see something like that happening with her husband, but she's like no, it's ये fun and games चल रही हैं. And एंड then they देन are the ones getting blamed. उसको स्कूलिंग करनी के वो ठीक कर रही थी, तुम गलत हो. तुम्हें फुटेज मिल रही थी उसकी वजह से. एक्चुअली राखी सावंत वाज गेटिंग फुटेज फ्रॉम द अभिनव. ये चीज उन लोगों ने रियलाइज होने नहीं दी He है. was lucky कि Abhinav let her do this and Rubina let Yeah. her do this. वो क्यों नहीं कोई सोच रहा? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ जब रुबीना ने अपना सीक्रेट शेयर किया था, ऑल्दो दैट वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड इवन बाय द हाउसमेट्स, स्पेशली आरकेवी या राहुल कृष्णवेद्य एंड एजाज खान की. जी ये झूठ लगता है, ये तो विकेशस भी हैं. people who are beautiful looking, perfect looking, लेकिन they have problems. Yeah. और मुझे लगता है अभिनव और रुबीना का वो डिसीजन बिग बॉस में आने का at that critical point of time of their lives, वो बहुत उनके लिए फायदेमंद रहा भी. क्योंकि आप खुद को जब ऐसे सिचुएशन में डालते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं. एंड they came out like winners. ठीक है, अब उनका प्यार नजर भी आता है. वो हमेशा इकट्ठे भी होते हैं, एक दूसरे को चीयर कर रहे होते हैं. पहले वो खतरों के खिलाड़ी में था तो ये चीयर कर रही थी, अभी ये खतरों के खिलाड़ी में है तो ये चीयर कर रही हैं. एंड इट्स ब्यूटीफुल. दिस आई थिंक बिग बॉस की हिस्ट्री में टिल डेट रुबीना इज द वन कपल who is the couple goal basically. Yeah, 100%. But I feel like in a closed space where you have nothing going on, you know, जो strangers भी मिलते हैं, they become friends and they don't last. क्योंकि there's so much happening, तू मैं ये हो गया, वो हो गया. And I feel like a struggling couple who knows, they knew कि we are struggling right now, कुछ भी हो सकता है. You're going to a pressure cooker, which is Big Boss. कुछ भी हो सकता था. Maybe they would have had even more differences. But like you said, and I think मैंने उनकी interviews भी देखी हैं, they said like Big Boss was a boon. Because they realized कि जो हम छोटी छोटी बातों पे argue करते हैं, in real life, there's so many other things that can happen. Okay. This same season, Odie, I was so shocked and surprised when this Jordy happened from nowhere. Nowhere. कि इनकी communication होती है, इनकी friendship भी है, hi hello चल रही है, थोड़ा flirtation भी है. पर जैसे एक दिन एजाज ने कहा कि पवित्रा को वो पसंद करता है, and I was like, what? What is happening? And then when Pavitra came, जैसे वो मिले, एजाज इतना खुश हुआ. He was looking so cute. And I literally was shocked as the housemates. ये कब हुआ? कैसे हुआ? कहाँ हुआ? And now they're still strong. They post very surprising. Very surprising. They go to events together. I am really happy for Eijaz क्योंकि उसकी life में भी बहुत ups and downs. And even Pavitra, उसकी life तो चलो Big Boss में ही उछालते रहे हैं with different exes and all of that. This is another really. Okay, when I say mature, I don't mean कि no fights and no drama, क्योंकि उनकी भी टकरार होती है. They're very hot-headed. बहुत होती. I mean mature as in they also are not like teenagers. Ha ha he हू नहीं हो रहा इनका. I think they look good together too. They're nice. I like them. I follow them both. They are the firebrand, you know. दोनों में अग्नि है एक. जो प्रोमो करते हैं ना इशकजादे, वहां से नजर आया कि yes, there must be something. The wish. Pavitra is such a firebrand. वो जाके मुंह पे खड़ी होती, कर, बोल, and I was like, girl, what is she doing? Very hot chemistry. उनकी लड़ाई Sexy chemistry, chemistry थी ना. फिर ऊपर से गाना इतना परफेक्ट लगाया. Even then I was like, okay fine, क्योंकि पवित्रा ने निकी तंबोली को बोला था कि तू अपने फोकस रहे गेम के ऊपर, तू ये जान वगैरह में ना पड़. तो I was like, क्योंकि पवित्रा के बाहर भी रिलेशंस काफी फेमस रहे में, बीट पारस, बीट हर फर्स्ट हस्बैंड, बीट इवन प्रतीक फॉर दैट मैटर. तो मुझे लगता है शी इज वेरी सॉर्टेड. But she's struck by the love, and we never know वो प्यार कब हुआ, कैसे हुआ. And Eijaz was the front runner even. हम उसको front runner consider कर सकते थे. Suddenly it all changed. And there उनका प्यार जिस तरह से नजर आता है. She get eliminated. वो वापस आती है उसको मिलने के लिए. That scratching on the glass. Oh my god. Khansab. I was like, oh my god. I was like, that whole shisha is gonna melt. They were like, damn. And I love उसने क्या कहा था, ये जैसी भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और whatever. जैसी भी है. नहीं, even you know उनकी किचन में कॉन्वर्सेशन थी, उसे कहती है साथ निभा पाओगे.
और वो पूरा रेडी था। मैंने कहा ये बकवास कर रहे हैं, ये नहीं I think सीरियस that हो was सकते। harmless flirting, थोड़ी बहुत flirting तो चलती है, हाँ, लेकिन आई नेवर थॉट दे विल बी टुगेदर एंड देन इन दैट मीडिया राउंड जब वो उसको कैमरे पे ले आया कि शी इज विद मी, इवन आई वाज लाइक रियली दिस इज हैपनिंग, आर यू सीरियस? बट नाउ वो जो अपने शलवार कमीजों में आते हैं, अपने Oh शलवार सूट के yes, अंदर दोनों नजर आते हैं, दे आर yes. सो ब्यूटीफुल। आई एम सो Beautiful. हैप्पी एक्चुअली, I'm फॉर really happy. एजाज एंड पवित्रा आई एम I'm हैप्पी। really happy. I thought कि as a player वो थोड़ा disappoint कर गया क्योंकि I thought he was gonna win. I have been a fan of Eijaz for a long, long time. And I या just think as far as this couple goes, I love it. Yeah. क्योंकि दोनों में वही बात है, अग्नि भी बहुत है, लेकिन एजाज ने बहुत देखा है, ही डिजर्व्स लव एंड थैंकफुली पवित्रा इज लविंग हिम ऑल द वे, और नजर आता है प्यार। उनका पीडीए देखने से लायक होता है, उनका पीडीए मजे का होता है। आई Their लव देयर PA, पीडीए। like उनको देख के तो हमें शर्म आ जाए, like oh my god, हमारी क्या हो रहा है? God. अच्छा, जहां हम इनको फायर ब्रांड फायर क्रैकर कह रहे हैं ना, उसी सीजन में एक और जोड़ी थी जो no, we're just friends, we're just friends, we're just friends. I guess you can call them a cute jodi. They're not a firebrand jodi, but they are a cute, No. giggly, fun jodi. Okay, and that is Jazli, right? Ali and Jasmine. आई रियली लाइक जैस्लिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो बहुत पसंद थी पहले से। हाँ, गेम में उसने क्या किया, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। और मुझे पहले से पता था कि इनकी दोस्ती नहीं है। व्हाई? बिकॉज अली ने उससे पहले जिस नच बलिए किया, वहां पे वो आती है, कहती है ये सिर्फ मेरा है, दोस्त है जो है ये मेरा है। एंड आई वाज लाइक दिस कांट बी फ्रेंडशिप। खतरों के खिलाड़ी में इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। They were really like हाँ, वहां friends लोगों या को जो फर्स्ट भी टाइम, चल रहा या था। फर्स्ट टाइम लोगों को, जब ऑडियंस को पता चला कि हाँ इन दोनों के दरमियान देयर इज समथिंग मोर देन फ्रेंडशिप, बिकॉज उनका भी पीडीए होता है अपनी तरीके से। Yeah. क्योंकि जैस्लीन वाज अ बबली कैरेक्टर, वो क्यूट Yes. है, आवाजें निकालती है, ये वो, व्हिच अल्टीमेटली वेंट इनटू समथिंग एल्स। लेकिन Let's not touch that. आई लव देम टुगेदर, लेकिन इन द गेम आई थिंक अली रूइंड हिज हर गेम। मुझे तो अली की वजह से उसकी गेम अफेक्ट हुई Yeah. थी। लेकिन दे आर नॉट वन ऑफ माय फेवरेट्स, बट आई लाइक देम इंडिविजुअली। Yeah. I like Jaslyn as a separate individual and Ali as separate, but as a couple, I'm fine with them. मतलब, Yeah. और especially जब उनके parents आए थे, so Jaslyn के parents Ah, were like, oh they were like, God, that was very no, awkward for a moment. it was नहीं awkward. बेटा, नहीं नहीं। Yes. No, Yeah, so yeah, I'm actually the same. मुझे ना like इतना है like oh my god, Jazzy, और ना मुझे ये है कि oh no, I don't like them. For me, they're fine. yeah, They like each other. they're ठीक fine. है. Yeah, They're cute together. They like each other. Fine. I have no like strong emotion, good or bad, with them. Let's talk about a couple of other favorite jodis that have lasted. Okay, and I think this is Bigg Boss season 13. First is Asim and Himanshi. I loved them when they were just friends. I loved जब ये relationship शुरू हो रहा था. I knew she was engaged. We all knew that, but I loved how he was with her. ये जो firebrand था ना, गुस्से वाला, थोड़ा सा arrogant, stylish. I just young. felt like हाँ, पर वो जब आई, वो ऐसे change हुआ, like completely other side of him, and I loved कि वो भी calm and collected थी. There was so much drama happening in her life at that time as well. They were so cute, and मुझे आज तक याद है कि सलमान in one of the weekend wars said कि देख, ये अपना अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब तेरे पास आई है because you said you love her. तो अब मैंने देखना है how you keep this going. And I remember he said कि I love you now and I will love you forever. So taking those words, I mean forever तो बहुत है, लेकिन they're still together. इनके songs आते हैं, इनकी ये vacations पे जाते हैं, इनकी stories आती है. I just love them. आसिम एंड हिमांशी को लेके आई हैव टू से, क्योंकि जब हिमांशी आई थी आई वाज ऑस्ट्रक बाय द ब्यूटी। आई नेवर न्यू हिमांशी कौन है। Himanshi is such a beautiful woman. She Yeah. has maintained her dignity. She has been, humiliated. She has been mocked by her for her accent, way of speaking. Lekin, the way she got the support from Asim, and the way that, heart wala paratha banta and all that, Yes. lovely moments. It was very organic for me. Yes. Like you said, हिमांशी was engaged from outside. तो बहुत critical लगता है कि क्या ये रहेंगे इकट्ठे, क्या ये कैमरे के लिए हो रहा है। I was also very skeptical. लेकिन when he was confronted by Salman and then he maintained his stood his word ground. and so वो young angry boy man कब बनता है, वो अपने word पे खड़ा उतरता है, वो उसका साथ देता है, and she also, because she was a star in Punjab, Yes. तो उसके लिए वो भी साथ आती है, it is huge. तो वो एक बड़ा strong couple बन के सामने आता है कि हाँ, this is the man or this is the woman I'm gonna be with
तो आप बहुत कुछ पीछे छोड़ते हो. She has burnt a lot of bridges, Yeah, so it's not easy. it's not So that easy. is why उनकी She's strong. Himanshi, Asim, again one of my favorite couples. He used to just look at her. कुछ कहना भी नहीं है. When she passed by, he would just look at her, and it looked like Yeah. पता नहीं ये किस दुनिया में चला गया है. हमने अभी कहा है कि उसकी लाइफ में बहुत हुआ है, good and bad, Himanshi, right? But she has a very strong man with her who has stood Yeah. by her through thick and thin. क्योंकि उसने तो झेलना ही था, but he has also taken it on, and that's the mark of a Yeah. partner. मुझे ये भी लगा कि maybe Asim की जो family है, they're a little iffy about this whole relationship. Yeah, yeah. Maybe they don't want Himanshi there. Maybe उनकी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है. जो भी है, I'm just saying कि मुझे लगा कि with his family pressure, he might think twice. But it's amazing to see, that he has stood by her. And even he has involved her into his life, like with his brother, Umar. So I really love that as well. And Yeah, और ये I चीज hope ये जोड़ी marriage में, इंशाल्लाह डेफिनेटली. Yeah. और हिमांशी को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि वो उसकी फैमिली के साथ भी स्टूड की है. इट्स नॉट इजी. इट इज वन ऑफ द जोड़ीज जहां पे आपको नजर आता है कि लड़का लड़की एक दूसरे की फैमिलीज के साथ भी आपको नजर आएंगे या पब्लिक प्लेसेस के अंदर नजर आएंगे, वरना अदरवाइज वो इतना पीडीए नहीं करते. इन दोनों की अच्छी बात है, स्पेशली हिमांशी की, कि वो बड़ी रिस्पेक्टफुल रही है टुवर्ड्स उमर, उसकी सपोर्ट में भी रही है. ये हमने देखा भी है. And I just love how Asim just appreciates her beauty so much. Like She is beautiful. I think she's one of the most beautiful She's like faces in India. She's like a murti. She is beautiful. And जब ये suits डाल के आती है ना, it's like no one can wear them better than Himanshi Khurrana. बहुत फुर्सत से बनाया है भगवान ने इनको. बहुत प्यार से सांचा है. Seriously. इसी सीजन में एक और जोड़ी आई है. जब ये जोड़ी बनी थी, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, कि ये real है, ये real. Okay, you know who I'm talking about. Abracadabra, मैं हूँ पारस छाबरा with Mahira Sharma. I don't know कि ये कभी fan favorite बने, because I think कि उस show में there were two favorites that everyone was after, right? So I don't think he was ever a fan favorite, and nahi Mahira, but I feel like they have also stood the test of time. They are also together and working together and with each other, which I think is also commendable. क्योंकि हमारे जैसे बहुत है कि ये real है, ये क्या चल रहा है, ये game का चल रहा है, क्योंकि Paras was a trickster. We never knew what was going on with him. तो मुझे लगा कि I don't know what this is. पर फिर जैसे इनका हुआ और अभी तक चल रहा है, kudos to them. माहिरा और पारस को लेके ये भी है कि वो पार्टनरशिप में अभी they work together. So that is the beauty of it. Yes. And to me, it was also very surprising to see them together. Like you said, it was quite skeptical कि इनका क्या सीन है, ये दोस्त हैं क्या है, क्योंकि अंदर वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. In a sense, they were never accepting it. They were like friend है, best friend है, ये वो. उसकी माँ का आकर कहना, then माहिरा की माँ का आकर कुछ और कहना. लेकिन they were never my favorite in the show. Although चाहे वो ऐसे कपल हो, पारस को अगेन आई थिंक आई कैन गिव के वो अच्छा गेम कर रहा था. माहिरा की गेम नहीं थी. माहिरा वाज जस्ट उसकी गेम ही नहीं थी. मुझे पारस पसंद था. आई लव्ड हिज ट्रिकस्टर जोकस्टर थिंग्स. आई थिंक लोग कहते थे बहुत अनोइंग है और बहुत ओवर करता है. मुझे फिर भी ये फन लगता था कि थोड़ा मिर्च मसाला तो ये कर रहा है ना. And I feel like he carried her. Exactly, he has. He brought her along. So I feel like very true. Yeah. As far as them outside, maybe one day they will also, end up in marriage or whatever. But even if not, I feel like, they are still with each other. They have genuine feelings. So sometimes जो हम सोचते हैं ना, is not reality. Exactly. चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इनकी दोस्ती हो, कुछ भी हो, they have gone through the test of time and they are still together, which is good actually. It is appreciable. It's commendable. So yeah, happy for them, but not a huge fan of Pahira or Mahira and Paras, whatever. Pahira था उनका. Pahira, I don't know. These hashtags, man. Okay, now season 7, I think. 7. Okay, we have Gohar and Kushal. I know they have both moved on, but guys, we are just talking strictly Bigg Boss couples, not what's happening right now. We know there was a fallout and all of that. So them two, and then Tanisha and Arman as well. So these were, I think, the only love stories during that time. या जो भी था, मुझे अभी याद नहीं था. I think these were the main ones going on. Main ones. मेरा perception ये था
I didn't like either जोड़ी. Okay, मुझे ये जोड़ी पसंद नहीं थी. मुझे तनीषा and अरमान की जोड़ी बहुत ही टॉक्सिक लगती थी. Not from Tanisha's end, from Arman's end. और हमने शो Yeah. में देखा भी था कि he was very aggressive and scary, and I just thought he had anger issues. And I thought he used to like अपना robe झाड़ना. You know, he used to really control what she did, how she did, what she said. I'm not surprised कि ये जोड़ी टिकी नहीं. Because लग रहा था कि Thankfully. too much, and thankfully I don't know what could have happened. On the flip side, full disclosure, मुझे as a contestant मुझे गौहर भी इतनी पसंद नहीं थी. हालांकि I love her now, but in the season I wasn't a fan of her. I like Tanisha better in the season. जहाँ Yeah. तक इनकी जोड़ी थी मुझे भी इतनी खास वो लगी नहीं. I was like fine, they both liked each other. She stood for him. जब उसने वो violence किया था, he got sent, she left with him. So it showed कि she was very committed in this relationship जो भी है. So I'm not saying कि कुछ fake था, fake नहीं था, because they lasted a while outside of the home too. But just as a viewer, I never was attached to either of these couples. मेरा ये है कि देखो खुशहाल को आई हैव सीन द सोप आई वाज लाइक ओके फाइन ही इज अ गुड लुकिंग गाय गुड इनफ. गोहर को आई वाज रूटिंग बिफोर बिग बॉस क्योंकि उसने झलक दिखला जा देखा था वेयर शी लॉस्ट एंड शी वाज इन द सेकंड स्पॉट एंड आई वांटेड हर टू विन. लेकिन दैट इज वन ऑफ द फेवरेट सीजंस आई गेस. तो जब इन दोनों के कपल्स बनते आई थिंक ये वाहिद सीजन है जहां से प्यार बहुत ज्यादा ब्रू करना शुरू कर दिया था इन रियलिटी शोज. क्योंकि गौहर ने जो स्टैंड लिया था वो इजी स्टैंड नहीं था. कोई किसी के लिए बाहर नहीं जाते बीइंग अ सेलिब्रिटी आल्सो. तो शी स्टूड फॉर हिम. मेरा प्रॉब्लम ये था दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं, लड़के बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं. अरमान को लेके कंट्रोल करना एक अलग बात है, वो उसकी लॉयल्टी को क्वेश्चन भी बहुत करते रहे एंड आई फेल्ट वेरी बैड फॉर तनीषा. क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है लड़ाइयों के अंदर वो उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करता था, वो उसकी लॉयल्टी को क्वेश्चन करता था. वेयर वी हैव सीन इट कि तनीषा हैज बीन द मोस्ट लॉयल फ्रेंड और companion to that man. He helped him. And these are the two couples. Thankfully, they didn't last because not a fan of the couple, but fan of the individuals, yes, but not the couple. You said that this was a season that brought up these jodiyan, this love angles, and I think after that the hashtag started. But this was a season jahan your love stories were so prominent. Actually, yeah. But there was also an OG couple, okay? And when I say OG couple, I'm talking about Bigg Boss season 1. That was what, like 15 years ago now or 16 years ago? So, ye jo reality TV, reality shows, we weren't jaded. ये नहीं था कि सब प्लानिंग है, ये सब बाहर से मशीनरी चल रही है, तब तो there was no PR thing, there was no social media, and nothing forced. तो तब season 1 में चोरी चोरी छुपके कुछ हो रहा था, and वो हो रहा था between Aryan Ved and Anupama Verma, है ना? And they were so cute. उनका थोड़ा baby, hello, hi, pillow talk चलता था. And I was like, hi, कितना cute है. You guys, this was like 15, 16 years ago. जब मुझे लग रहा था कि प्यार ही प्यार होना चाहिए चारों तरफ. I love. And उनको देख के मुझे लगा, hi, you can go somewhere. And अचानक कोई मिल जाता है और ऐसे प्यार हो जाता है. कितना cute है ये सब, है ना? And then, at the finale, I was crushed. Because जब अरशद वारसी ने अनुपमा को पूछा कि अभी भी ये चल रहा है कि what's going on, तो उसने कहा कि अंदर जैसे सपना था बाहर ऐसे होता नहीं है लाइफ में. So I was like crushed. Wow. I was like, oh my god. And वो dialogue जो भी उसने मारा था सीधा यहाँ लगा था कि they are the models जो उन्होंने movies भी की which are bad actors basically, लेकिन they have done movies. तो actually दोनों का ये कि क्योंकि good looking है, young थे, model थे, beautiful bodies, beautiful looking people, तो hotness quotient बहुत था. उस season का hotness quotient यही थे. They are the pioneers of the love in the reality shows on Indian screen. जिन्होंने दिखाया कि खूबसूरत लोग भी होते हैं, प्यार भी खूबसूरत होता है. कितना चलता है वो questionable हो सकता है, लेकिन yes, जब आपकी दुनिया बिग बॉस है, ये प्यार चलेगा. बिग बॉस से निकलोगे, असली दुनिया में जाओगे, then there's no like a surety कि ये चलना कि नहीं चलना. जब तक वो आपके सामने कैमरास के सामने, तो ये प्यार देखो और एंजॉय करो. That's how I felt. लेकिन एक बात है ना कीर्ति, जब आपको पता है कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक क्लोज्ड प्लेस में गुजारना है, it is bound to happen. आपकी फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं. There's no problem in it. I love it. मेरे फेवरेट ओजीज के अंदर आशमित पटेल और वीना मलिक थे. They were also very hot couple, मेरे ख्याल से हम बात करते हैं ना जब भी कि बिग बॉस का फैशन कौन लेके आता है, पीपल से कि जी हिना खान was a fashionista of Bigg Boss. लेकिन ओरिजिनली वीना मलिक ने अपने हील्स के थ्रू
जो stomping की थी उस season के अंदर, she was sexy as hell, I know you and love that too her in the heel. presence of and that too in the presence of Shweta Tiwari and Sara Ali Khan. So basically उन दोनों की भी उनके लव मोमेंट्स इतने ज्यादा फेमस हैं अश्मित और वीना Weren't they मलिक the के. first people to have PDA? Like सबके सामने या मचाती एग्जैक्ट and टू मच पीडीए गोइंग ऑन. रात को ड्यूटी लगी हुई है बाहर की जी सजा मिली हुई है, वो उसकी गोदी में सर रख के उसको मसाजे दे रही है. एंड एक्चुअली उसकी वजह से दोनों को फुटेज भी बहुत मिली. हाँ. उसका फायदा दोनों को बहुत हुआ. पाकिस्तान के अंदर भी आई बॉल्स बहुत ग्रैब हुए बिकॉज वीना मलिक इज देयर. अच्छा ओडी तू मुझे बताना ये कौन सा सीजन है. आई थिंक इट्स सीजन 8. वी हैड 2 जोड़ीज हियर. एक जो जोड़ी पहले से थी जो अंदर आई थी और एक जो जोड़ी बनी नहीं बनी फिर बन गई एंड में. दिस इज किशोर मर्चेंट एंड सुयश राय एंड देन प्रिंस नरूला एंड युविका. सीजन 9. सीजन 9 है ये. ठीक है. For this, I already knew कि किशोर and Suyash are together, पर मुझे थोड़ा shocking लगा था जब वो आए क्योंकि I was like, I don't know, how is this gonna work, right? But I really like them. वो support करते थे एक दूसरे को. उन्होंने ये भी अभी तक दिखाया, you know, they're married, they have a child, they have a beautiful life together. So they showed कि हम couple थे, हम यहाँ आए. This game didn't come between us. हालांकि they were also competing against each other. But I feel like एक point आया था जहाँ सुयश ने back seat ले ली थी and he let his lady love go ahead. I feel like ये अलग बात है कि फिर प्रिंस के सामने किशोर took a bow, you know, which I didn't like at all. Okay? I hated that. ऋषभ था और उसने ये पता नहीं सुयश को like कुत्ता बना के रखा था या कुछ. सुयश को नहीं किशोर को कुत्ता बनाया था ऋषभ ने. हाँ. So I was like really like मुझे कुछ हो रहा था देख के. I was like this is so disrespectful to another level. And can you imagine what Suyash must have felt during that time? It was apparent in his eyes. I'm fine कि चलो ठीक है उसको सजा दी लेकिन it prolonged unnecessarily. इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए था. वहां रिशांत गलत था. उसको 1 मिनट बनाया था चलो छोड़ दिया था खत्म हो जाती बात. It's enough. Secondly किशोर और सुयश के अंदर I was a किशोर fan. I was never a सुयश fan. सुयश की बैड लग ये थी उसको रिमी से नहीं, but I was a Kishwar fan more. I was, she was a strong lady. I have no problem with Suyash, but yeah, Kishwar was my favorite that time. और Kishwar क्योंकि strong भी थी and that took Suyash की bad luck के रिमी से उसको partner मिली and she didn't let him perform. Do you remember वो जब आई या पता नहीं किसी weekend के बार में उसने कहा था कि I'm a lucky mascot for films. जिस film में मैं होती हूँ, the film does really well. तो ये लकी कहाँ गया जब वो बिग बॉस में आई. वो तो कहती थी उसकी निकालो. In that season, my favorite was not this couple जो बाहर से couple था. It was Rochelle and Keith. Keith is also. Oh God. Keith was Abhinav before Abhinav came to Bigg Boss. Talk about brains and looks as well. Okay. उस कपल में मुझे रोशेल नहीं पसंद थी. मुझे कीथ बहुत ही ज्यादा पसंद था because Keith was this mature इंसान who didn't do dirty politics, didn't get into, like नीचपन जो वो होता है. And on the flip side, he supported Rochelle like crazy. Rochelle emotionally ऐसे थी. हर दूसरे दिन Rochelle was a tough lady. Rochelle was a tough lady. हाँ कि तू मुझे लव नहीं कर रहा, तू मुझे सपोर्ट नहीं करता, तू मुझे पसंद नहीं करता. And he's like मैं सब करता हूँ यार. Like seriously. मेरे लिए हाईलाइट रहेगा जब ये दोनों ने पूल में आग लगाई थी. There was this whole sequence in that swimming pool जहाँ पे they were doing cardio and then love song is going on. I was like इतना फायर पूल में कैसे लगा दिया दोनों ने. They were very sexy together. Like and they got married, yes, and they were happy together. इनको छोड़ो ये प्रिंस के ऊपर आओ. I found Prince and Yuvika so cute together. Like Prince was a very aggressive and strong-headed contestant. मुझे इतना पसंद नहीं था वो क्योंकि मैं किशोर को support कर रही थी to win the season, है ना. तो मुझे लग रहा था कि हर बात इसकी क्यों सुनते हैं, इसको क्यों जिता रहे हैं. Why did किशोर back out? भाई बहन है तो भाई निकल जाता, बहन को जाने देता, पर बहन निकल गई. I had this thing against him. But with Yuvika, you saw this childlike innocence, this shyness, this cuteness. मुझे बहुत पसंद था. जब Yuvika निकली, I felt so bad, because इनका कुछ हो रहा था, है ना. But then what happened? Yuvika निकली और नोरा आ गई थी. And then कि नोरा के साथ भी थोड़ा इसका चलने लग गया. And I was like, what the hell is happening? I was like, Yuvika just left and यहाँ नोरा आई और तो नोरा के पीछे. But then he always maintained, we're just friends, we're just friends, we're just friends. And look how strong this Yuvika is.
क्योंकि वो सब टीवी पे देख रही थी, and then at the end of the season they were together and now they're happily married. Yuvika and Prince are shocker for me, to be very honest. Because I love Yuvika. To be very honest, I'm a Yuvika fan. I'm not a Prince fan. Yeah. She's like a Diya Mirza, you know, decent girl, प्यारा बोलती है, खूबसूरत दिखती है. और उसकी स्माइल, वो स्माइल करती है, उसका फेस इतना इनोसेंट लगता है ना. मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि प्रिंस जैसा एग्रेशन, एंग्री यंग मैन, ही इज अनदर कुशाल बेसिकली, यू नो, एग्रेशन है, पता नहीं है, ही इज अ बुल. Prince has won 5 shows. Yeah, to my surprise as well. लेकिन मुझे तो प्रिंस का यही है कि वो जब गेम में होते हैं, he plays for the game only. उनको पता है कि चाहे वो नोरा वाला सीन था ना, बेशक वो आर्टिफिशियल था, बट ही नोज ये चल जाएगा. सो एक्चुअल उसकी अलायंस, एक्चुअल उसका प्यार युविका के साथ था, जिसके लिए उसने दिल वाला परांठा बनाया था, वो नजर आ गया था. दिल वाला परांठा आता रहता है यार. It was a surprise when they got married. Okay, fine, they dated. I was like, चलो डेट कर रही हैं. जब शादी हो गई, I was like, really? How lucky Prince is. I think Prince is really lucky. Prince is very lucky. To be very honest. And Yuvika, she has a strength. She's a strong lady. Yuvika got in the controversy that she got in unknowingly, knowingly, wo chodo. She got in a controversy, but the Prince stood by her like a rock. So once again, I feel like jahan, you know, Yuvika is his rock, he's equally her rock. And that's that's the best thing about a relationship. When someone has ups and downs, the other is there to cover. This is season 9, OD, Gautam Gulati ka. Season 9 was Kishwar season. Season 8 was Gautam Gulati. हाँ, ये मैं miss कर देती हूँ. And this is so bad क्योंकि till date he's my favorite winner. I love Gautam Gulati. I love him. The reason we're talking about Gautam is because I don't know कि ये couple था या बनते बनते रह गया या जो भी था. But there was something between Gautam and Diandra. Like I just said, मुझे Gautam बहुत पसंद था. He was good looking. And अगर लोग कहते हैं कि वो fake कर रहा था, जो भी कर रहा था, but damn, for a whole season उस बंदे ने fake किया. Like no, वो ऐसे star बन के गया था. Then good faker. Yeah. जो भी था, okay. मुझे लगा कि he kept the character, he won. अच्छा, जो भी है. But एक time पे वो मुझे बहुत बुरा लगा, and that's what happened with Diandra. अगर तुझे एक बंदी पसंद आ रही है, इतनी पसंद आ रही है कि तू बाथरूम में घुस गया था, जो भी करने, I'm not saying they did anything, पर कैमरा पे तो लगेगा ना when hundreds or thousands of people are watching you, right? So I felt if you can do all of that and then you hear from your brother or your mom, जो भी था, that they don't like this girl, तो एक सेकंड में उसको बाय बाय कर देना है. Like एक सेकंड में, like you can just throw someone away. So I felt really bad about that. I understand कि आपकी family है, you have to listen and respect them as well. फिर उस लड़की की respect कहाँ गई? गौतम बहुत सॉर्टेड था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. गौतम वाज अ वेरी सॉर्टेड कंटेस्टेंट. उसको पता था उसने जीतना है, उसको पता था कि मुझे गेम खेलना है और अच्छा खेलना है. अगर उसको फुटेज मिल रही है फ्रॉम डायंड्रा, बीट सोनाली, इवन फॉर दैट मैटर, सोनाली के साथ भी उसका थोड़ा बहुत लिंकिंग चला था. द प्रॉब्लम इज जब स्कूलिंग की जाती है ना कि जी नहीं हमें डायंड्रा पसंद नहीं है, पीपल क्रिटिसाइज कि वो उस उम्र में बड़ी है, लेकिन Diandra never thoppified herself on him. वो equally उसको घास डाल रहा था, equally flirt करता, उसकी टांगों की ऑयलिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है when they were there in that plane thing even. And I loved Diandra. She is one of the strongest, you know, strong-headed girls I have come across. She wasn't someone you can put in a box, and that's the best thing I love about her. And even Neha in this, you know, exactly. I love Neha. They are the badasses. Badass. They are the badass. I love women who stand up for themselves and they don't listen. कि आपने जो बकवास करनी है करो. I'm gonna do what I think is right. I love that. Yeah, exactly. I love Diandra. मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा था. I'm not saying कि ये couple थे भी. ये flirtation जो भी चल रहा था, but you can't just drop her like she's like an insect. Problem is Diandra ने कभी भी उसकी तरफ वो possession नहीं दिखाई है. Diandra भी flirt करती थी. She's fine with flirting. चलो kissing भी करे. For which people are like ha क्या हो गया? Exactly. लेकिन again क्योंकि moral policing बहुत ज़्यादा की गई थी. Diandra was happy flirting. He was happy flirting. The problem is कि वो backstep ले लेता है उस schooling के चक्कर में, where she felt really bad कि why he doesn't have to do it. And उसी season में ये भी थे Upin and Karishma, because like I just said कि मैं बहुत बड़ी गौतम की fan थी, because from day one जब वो corner हुआ, ऐसा करिश्मा की वजह से हुआ था. करिश्मा की वजह से हुआ था ना, तो इतना वो corner हुआ, उसने इतना ड्रामा किया, मैंने कहा ये बंदा जीतेगा अब. तो anyways वो सब हुआ,
But I thought Open and Karishma made a hot couple as well. They were very They were hot people, good looking exactly. guys. मुझे अभी तक याद है, Open used to go like this. You know, and ये सलमान कहता है फिर से कर. That was so funny. But मुझे वो बहुत cute लगे. Now I know कि वो भी last नहीं हुए. But in the world of Bigg Boss, I think they were another hot जोड़ी. I was a Karishma fan, ठीक है, and Gautam fan as well, but I was on Karishma side. मुझे करिश्मा पसंद थी, क्योंकि करिश्मा भी बहुत उसने स्टीरियोटाइप्स तोड़े थे. It wasn't easy to be करिश्मा as well. मेकअप को लेके उस वक्त उसको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आज के टाइम पे हम उसकी वजह से रियलाइज करते हैं मेकअप कितना जरूरी है. और अगर आप सेल्फिश हो रहे हो अपनी चीजों के लिए, वो आपकी गेम है, दैट्स फाइन, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, उपेन और इसका उस टाइम पे सामने आना, जब उपेन बाहर जा चुका था, फिर उपेन को वापस लाया जाता है उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए, बिकॉज इनका अंदर खाने में क्या चले, दे वर सो स्ट्रांग कि इन्होंने रियलाइज नहीं होने दिया. और फिर मेकर्स मस्ट हैव टोल्ड कि नहीं, हमें ये स्टोरी चाहिए. एंड अगेन करिश्मा हु वाज हैविंग अ बॉयफ्रेंड आउटसाइड, उसको सब्जेक्ट किया जाता है क्रिटिसिज्म को लेके, उसको स्लट शेम करते हैं. हाउ कैन शी डू इट, उसका बॉयफ्रेंड है, ये है वो है. बट डैम, दैट गर्ल वाज स्ट्रांग इनफ टू स्टैंड विद उपेन इवन आफ्टर द शो. उसकी मदर वाज वेरी सपोर्टिव करिश्मा की फॉर उपेन. लेकिन सैडली this is one of the couple जो बड़े गंदे नोट पे एंड हुआ. But I'm happy for Karishma. She's married. Yeah, she's married happily happy. married. Yeah. And इस टॉपिक में मुझे एक बात वो कहनी थी. You just talked about how she was shamed and stuff. एक वो भी था ना कि पता नहीं, I forget who was making these jokes on her or jokes with her, and उसने complain किया कि मुझे ये jokes पसंद नहीं है. And प्रीतम ने ही कहा था. प्रीतम ने किया. उसको blame किया गया कि ये joke है, तू joke नहीं ले सकती. Like भाई मेरी नहीं, ये नहीं कहा गया था कि कीर्ति, सलमान खान was so bad. He was like, तुमने मस्ती फिल्म की है, which is adult comedy. Can't you take this joke? How is this justified? ये क्या statement था? वो रोल प्ले कर रही थी. This is her real life. उसको real space में नहीं चाहिए ये बकवास, तो नहीं चाहिए. So now let's go to the cringiest जोड़ीज. ये चलो, we'll just take them out of the way. एक तो राखी and रितेश. They were the most cringy. Oh God, please. Cringe number 1. उन पे cringe खत्म है. They are hands down number 1 cringe fest, okay? And वो बेचारी प्यार की भूखी बार बार उसको कह रही है मुझे हक दे दे, मुझे देख ले, मुझे थोड़ा अटेंशन दे दे, मुझे पप्पी दे दे, मुझे ये कर दे. जो उसने अभिनव के साथ किया था, मुझे लगा कि अभी अपने हस्बैंड के साथ करेगी, पर हस्बैंड ने उसको भाव नहीं दिया, which was sad. On the flip side, Ritesh was like an egomaniac. Like, hello, excuse me. You came to this show because of the Rakhi Samat. Rakhi. Okay? Yeah. Rakhi Samat ना होती तो ये रितेश कौन है? We don't know. कौन है? कहता तू चुप बैठ, मैं करूंगा जो करना है. Right? He was so arrogant. He never gave her respect. He was aggressive. I did not like him. I'm glad कि this Jodi is, not there anymore. I hated Ritesh. I love Rakhi somehow, but I can't stand Ritesh. The problem was his behavior. His personality was so misogynist. और उसको भी अगर मैं छोड़ दूं ना, I can't see them together making out. वो जब प्यार की पीढ़ी करते थे, कि जफ्फियां मारे, it was so cringy. Please, I couldn't take it. Please. नहीं देखना. नहीं देखना हमने. तो इनको एक साइड पे करो. I have 2 जोड़ीज for you now. One is बंदगी कालरा and Punish. Oh God. Okay? Yeah. The second one is Ishan and Maisha. Which was the cringe जोड़ी for you? I will tell you, लोगों को ईशान and मायशा पसंद नहीं थे. They thought कि इतनी I like them. 0 to 100 कैसे हुआ? लेकिन मुझे सच में लगा, once again मैं emotional fool हो सकती हूँ, okay? पर मुझे सच में लगा कि ईशान has something for her. He was so sweet with her. Like जो aggression opposition के साथ आता था, that was all gone when Maisha came. When Maisha was there, it was like up, ye, wo, it was so cute. So मुझे definitely लगा कि they have something. And even outside of Bigg Boss, they were still together. I'm not sure कि इस day नहीं, but they were for a while. Yeah. And then Punish and Bandagi, please. I was like, ये कैसे, क्या, कब, कहाँ, ये, what the hell is happening? I never understood this Jodi. Please help me understand. अच्छा, my thing is कि I was also like, मुझे ये पसंद थे. This Ishan and Maisha, I was rooting for them कि हाँ, they were fine. क्योंकि
इतनी जल्दी प्यार कैसे होता है लोगों को समझ में आता, दे कांट प्रोसेस इट, दैट इज देयर प्रॉब्लम। और ऊपर से ये था कि ईशान गुड लुकिंग बहुत था, मायशा वाज आल्सो सेक्सी, लेकिन शी मस्ट बी स्लट होगी, उसको स्लट शेम किया गया था अननेसेसरली, ये क्योंकि था। लड़की है तो वो जान के करी, इट इज नॉट ऑर्गेनिक फ्रॉम हर, वो सच्चा है ये सच्ची नहीं है, विच आई हेटेड। लेकिन बंदगी इन पुनिश आई कैन नॉट स्टैंड, क्योंकि वो ऐसी जोड़ी थी जो फेक जोड़ी बनी थी कि हम कैमरे के लिए करेंगे लव एंगल बनाएंगे, वो कब उनको प्यार हो गया, कब वो इतने सीरियस हो गए, And वो आई नेवर बाहर गेट आके इट। भी चले, they were together, right? दे आर स्टिल टुगेदर आई गेस, आई डोंट नो, They're बट still आई फील लाइक दे आर together. स्टिल टुगेदर। Oh या wow. बंदगी का अपना जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत गुड लुकिंग है, लेट मी टेल यू दैट, जो उसका पहले Bandagi बॉयफ्रेंड is था। pretty. Bandagi is pretty. So Odie, we must be clueless because we thought ये वी आर fake क्लूलेस, जोड़ी वी आर श्योरली ये क्लूलेस। totally क्योंकि ये fake जोड़ी प्यार में बदली प्यार में है and we are like हमें तो ये पसंद ही नहीं थे। जहां तक ईशान and Maisha, I also didn't like people were judging how fast they fell in love. लव हो जाता है आपके साथ इतनी जल्दी नहीं हुआ doesn't mean कि किसी और के साथ नहीं हो सकता and people forget कि ये 10 बंदे हैं, you're gonna उठो बैठो with these people every single day और कोई है नहीं, तो obviously when you're put in a situation तो emotions heightened हो जाते हैं। कीर्ति द थिंग इज, फिर आते हैं राजीव अदात्या जिन्होंने आके इन दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों? लेकिन इवन एट दैट टाइम जब राजीव आए थे, Oh आई God. लव्ड मायशा, शी वाज वेरी Yeah, डिग्निफाइड, she was so शी वाज वेरी dignified क्योंकि शी वाज वेरी राजीव ने डिग्निफाइड। इतना रबर किया वो पूरा सिनेरियो। Every या day he's talking about it non-stop। माँ ईशान थक गया कि बस कर मेरा यहाँ मायशा के साथ है, प्लीज हमें बख्श दे। वहाँ मायशा कहती कि I understand that you feel like this, but you know it's okay. Like she never insulted him, she never got mad at him. वो अकेले में रोई है, ईशान के साथ रोई है कि क्या हो रहा है, but she never said anything to him, and then that was when she won my heart because she या had every right to say something to him क्योंकि वो इतनी बकवास कर रहा था उसके साथ। वेरी ट्रू। और मेरे लिए ना दो क्रिंज कपल और हैं सरप्राइजिंगली, एक तो डिम्पी एंड राहुल महाजन इन बिग बॉस सीजन 8, ठीक है, अगेन आई कुडंट स्टैंड देम, मुझे वो समझ ही नहीं आई, मुफ्त एंगल डालने, डिम्पी सैड हो रही है और करिश्मा ने उसका सीक्रेट बस्ट किया, इसका तो बॉयफ्रेंड है दुबई में। जिसके साथ अब करिश्मा इज शादी तो भी हो गई है। Yes. हाँ राहुल महाजन की भी तो शादी हुई है अभी कि हुई होनी है, है, बट हो वो गई है। आई डोंट नो सम फ्रंग। लेकिन बात हुई है कि बिग बॉस के कपल्स की बात हो रही है तो टू मी देवर क्रिंज, लेकिन सैडली मैं लेना नहीं चाहता उस लड़की का नाम, बट रश्मि एंड आर्यन दे वर सो क्रिंज, रश्मि अयान और आर्यन, आर्यन, कौन आर्यन? वो जो उसका बॉयफ्रेंड अयान खान, आर्यन खान, वो जो नहीं, आया था, अरहान, आहान, अरहान। आहान, Oh यस सॉरी कट, God! उस रश्मि एंड बंदे का आहान, नाम क्यों लिया तूने? I cannot stand him. दे आर क्रिंज आल्सो ना, वो जितना भी एक दो एपिसोड की था दैट वाज क्रिंज फॉर मी, Oh my मुझे नहीं God. पसंद है वो, उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था that season. बट उसकी आई लव पूरी रश्मि। पर्सनल लाइफ ऐसे या like बाजार लग गया था. It was disgusting उसके साथ क्या हुआ. And this Arhan is the most disgusting. जो उसको इतना यूज किया and then disclose किया नहीं किया, obviously we don't know, तो हम पक्का नहीं कह सकते. But for this girl to cry the way she cried, that Salman Khan had to come in the house to console her. Like imagine कि लड़की के साथ क्या हुआ. And I understand कि you might not like Rashmi because you liked other contestants that season. लेकिन समझो कि उसके साथ क्या हुआ है. I was a Rashmi fan, to be very honest. I Yes, still am. I think I she's am. one of my I favorite love. people. Yes. Yeah, I love She's another Rashmi. strong one. So now we're going to talk about not couples, but two jodis that we wanted to be a couple. हम basically इनको ship करते हैं, okay? Hashtag हमने बना लिए थे इनके, okay? एक Umar and Rashmi. I love these two. I मुझे love them बहुत दिली together. तमन्ना है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं. I love them. मुझे दोस्त बन उनकी जाए, मैं कहता हूँ chemistry. दोस्त ही बन जाए, इकट्ठे हो हाँ. जाए। Yes. Okay, I just love them. मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी ये बिग बॉस में, उनकी conversations बहुत अच्छी थी. They looked great together. I was just in love with them. And I just wished कि oh my god इनका कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए. अभी तक हुआ नहीं है, पर कुछ हो जाए यार. I love them. Best part is रश्मि ने लाइक यू सेड इतना कुछ लाइफ में सफर किया है और उसकी लाइफ को जिस तरह से पब्लिसाइज किया गया है, Yep. उसके बाद शी हैज दिस बॉय इन द लाइफ हु इज अ फ्रेंड
who is a partner, वो उसको समझता भी अच्छा है. And Umar is one of those जो भी नया नया इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिनका भाई भी है. जब वो ये दोनों बाहर निकले थे ना, आई रिमेम्बर यू एंड आई वर टॉकिंग एंड वी लाइक ये भाभियां बन जाए, क्योंकि हिमांशु और रश्मि की दोस्ती भी बहुत थी. अफसाना की शादी में गए थे ना, अफसाना की शादी पे, एंड आई वाज लाइक भाई ये भाभियां बन जाए, कितना मजा है, देवरानी जिठानी बन जाए. एंड आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग कि ये इनकी दोस्ती नहीं रही, ठीक है, लेकिन आई स्टिल शिप फॉर देम. आई लव देम. आई लव नेहा, रश्मि, उमर, राजीव. इनका कॉम्बो इज लव. इनकी रील्स आर लव. इनका जो ग्रुप है ना, I love it. I think they're so fun. And Umar is just love. I love Umar. एक तो दिमागी भी बंदा है वो. हाँ, अभिनव की तरह he was also bashed for his profession, his दिमाग as well. I don't understand. अगर किसी ने मेहनत करके अपना कमाया है, जो भी कमाया है, don't degrade it. चलो, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि अभिनव को एंटरटेनमेंट के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता था, लेकिन उमर वाज वेरी एंटरटेनिंग. उमर रियाज ने अपनी एंटरटेनमेंट बहुत रखी है. एंड ही वाज हॉट. कम ऑन, ही वाज वेरी हॉट. ये करण, उमर एंड राजीव का डांस, come on, that was the best. I love it. तो ये जोड़ी होगी. एक और शिप है जो मैं आज तक करती आ रही हूँ, obviously it's never gonna happen. Okay, that was Gaurav Chopra and Bani. I love them together. I know कि ये कभी couple नहीं थे, but there were so many like me that were like, please couple बन जाओ, please couple बन जाओ. They had some chemistry. Okay, I know इनकी तकरार बहुत थी, पर एक गौरव था जो उसको संभालता था, because she was very emotionally like this as well, and he was very much like this. So he used to center her, calm her down. वो नाराज होती थी, गुस्सा करती थी उसके ऊपर, and still he would listen to her. I was like, oh my god. And they always had these flowers they talked about all the time. बहुत ही cute थे ये दोनों. But I don't even know if they're friends anymore or not. But I just loved them together on this show. And side note, मैं आज तक heartbroken हूँ कि बानी जीती नहीं. I loved her. I am heartbroken. Yeah. You know, this is the point. चाहे वो उमर रश्मि है, individually we love them, and as a couple we love them. Again, here Gaurav and Bani, I love them individually, and I love them as a couple even. Yes. The duo was lovely even. You know, unki friendship, I felt like I am a Bani, I want a Gaurav in my life jo mujhe, you know, 100% peaceful kar de. Exactly. Gaurav's voice. Okay. Oh god. His voice. Oh god. Oh my god. You can just hear him. Forget looking at him. You can just hear him. love. Yeah, and Bani again. I think one of the finest contestant. लेकिन बड़ा दुख होता जब वो नहीं जीती. I know. I was like, there's no way she's not gonna win. मैं हमेशा कहती हूँ, I don't care if someone wins, they win. Someone loses, it loses. I don't care anymore. You know why? Because of this season. जब वो हारी थी ना, उसके बाद मैंने अब खुद को कहा कि I'm never gonna care anymore. So now, Odi, we haven't talked about this Jodi. We didn't want them to go in a category. We are just gonna give a special mention, and this is Sidnaaz. Obviously, heartbreaking what happened to Siddharth. It was shocking. In America, you know, the time difference is a lot. So I literally woke up, Hannah. I turned on my phone, and that was the first headline I saw. And I literally was in shock. क्योंकि एक दो हफ्ते पहले वो डांस दीवाने में गए थे, उससे पहले वो बिग बॉस में गए थे. I think when I saw how Siddharth and Shahnaz were in Dance Divane and Bigg Boss, मुझे लगा कि these guys are so cute together. क्योंकि Shahnaz तो है प्यारी, you know, she's bubbly, she's fun, she's cute, you know, मुंह फट भी है, वो कह देती है जो कहना होता है, you know, हंसी मजाक में ले लेती हैं चीजें. So I love her, and I loved how he centered her somewhere as well. क्योंकि उनकी personalities तो बहुत different थी ना. But I just feel कि in Bigg Boss history, जब तक ये Bigg Boss चलेगा, तब तक Sidnaaz तो रहेंगे. There's no way कि इनका नाम नहीं ले सकते आप. Sidnaaz तो you know एक epitome of couple goals बन गए हैं. Hashtag कभी रहेगा तो वो Sidnaaz रहेगा. Yeah. People love Shahnaz. People loved Siddharth क्योंकि उसकी fan following थी. He was already famous. He was a known face. Shahnaz, somewhere, I don't know, this woman and this lovely girl, वो आती है, वो छाती है, उसकी खामोशी में कंटेंट था. या उसकी खामोशी में कंटेंट था, उसकी प्यार में कंटेंट था, उसकी नखरे में कंटेंट था, उसकी नोक झोंक में कंटेंट था, उसके वन लाइनर्स पे सीजन खत्म था. एंड द मोमेंट शी शोड हर लव फॉर सिद्धार्थ, उस वक्त भी चाहे वो सीजन खत्म हुआ, लेकिन बाद में जब एक सीजन आता है
मुझसे शादी करोगी करके फजूल का, उसके Yeah. अंदर इट वाज एविडेंट कि वो सिद्धार्थ के बगैर चल ही नहीं पा रही है। उसने 100 टाइम्स कहा था शो के दौरान भी टू सलमान टू एनीवन कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने सिड को नहीं छोड़ना, मैंने सिड को नहीं छोड़ना, सिड मेरा है, मेरा है। शी वाज लाइक ये बंदा ही मेरा है, लाइक कर लो जो मैंने करना है। तुझे जीतना है, मैंने Yeah. तुझे जीतना है। मुझे ये ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे सिड चाहिए, इसको सिड जीतना है चाहिए। मैंने। आई वाज हार्ट ब्रोकन फॉर हर क्योंकि उसकी तो पूरी दुनिया ही चलेगी ना, लाइक शी वाज एग्जैक्टली। इन द शो। अगर हमें दिख रहा था कि ऊपर नीचे नाइट डे इट वाज जस्ट सिड 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 फॉर हर, तो सोचो रियल लाइफ में कैसा होगा। उसमें इतनी स्ट्रेंथ है लड़की में कि वो अपने आप को प्रूव कर रही है। शी इज वर्किंग ऑन हर सेल्फ, शी इज Yes. कमिंग ऑन टू दिस ग्रेट कैलेंडर शूट्स हो या फिल्मों की बात अभी चल रही है कि प्रॉब्ली सलमान खान अप्रोच कर रहे हैं। वो Yes. अपने आप को पब्लिकली अब ले आ पाई है क्योंकि जब ये न्यूज ब्रेकआउट हुई थी, आई वाज इन ऑफिस एंड आई कुडंट बिलीव, आई वाज लाइक बकवास की है किसी ने, हाउ इज इट पॉसिबल, सिद्धार्थ कांट डाई। एंड व्हेन इट वाज कंफर्म्ड, आई पहला ध्यान ही शहनाज की तरफ जाता है। और Yes. फिर शहनाज की पिक्चर्स सैडली दिखाई जाती हैं एंड all the strength and all the happiness. So she deserves every bit of Deserves success and everything. happiness. Everything. Yeah. Okay, guys, so that is it for today. We talked about our favorite Jordis, our not so favorite Jordis, the Jordis we thought were a little cringe, the Jordis that were never Jordis, but we wanted to be Jordis. Okay, let us know in the comment section if you agree with us, disagree with us, who were your favorites and who weren't your favorites. And follow me on Paris602, Odie's Insta 18. We'll see you there. And like, share, comment, and subscribe to this video as well. Odie, tu bhi kuch keh? मेरी फेवरेट जोड़ी जो है वो हेमंत और कीर्ति शर्मा की है इन द एंटायर वर्ल्ड। आई वांट देम टू बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट कपल एवर। हमारी जोड़ी कितनी ऑसम है। हमारी जोड़ी भी पक्की है। Oh my God, Guys, okay, thank you you have to and do our please hearts. show love.